Hey, hello everybody. Ahoy. Welcome back to ship. So I hope you're ready for another class. So welcome to kidszee Graceland English School. And okay, let's begin. Okay, so as you know my name is Siddiq Shirgaonkar. One more time. एंड यस सो बेसिकली हमें पता लगा है काफ़ी पहले से कि आप लोग रीडिंग स्किल्स राइटिंग स्किल्स सब कुछ भूल नहीं गए बट काफ़ी उसमें वीक हो चुके हो। सो हमने एक ये जो क्लास रिवीजन की जो बनाई है ये बेसिकली सिर्फ रिवीजन है जो आपने पिछले साल लर्न किया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नया न्यू चैप्टर समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। सो we have decided that we will for a short period of time we will just help you revise all the stuff, all the things that you have actually learned in your previous class. Okay, so this is going to be your first science revision class. और ये जो भी आज के क्लास में पढ़ाया जाएगा ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा लेक्चर है, ये एक्स्ट्रा क्लास है और ये आपको सारी क्लास आपको खुद ही अपने बुक में लिखनी है। आपको ये सारा अपने बुक में होमवर्क बुक में लिखना है, ठीक है। सो आपको इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज साइंस basics revision class. Okay, so and this class is for students of class 5, class 6, class 7 and class 8. Okay, so let's revise the basic study about plants. Okay, we will revise about the basic study about plants again. Okay, this again one more time, this is not in your textbook, this is extra material. Okay, ये extra material है, hence you have to write down all of it in your homework book. Okay, all right, let's move to the next page. Aha, ahoy. What are plants? Who knows what are plants? Do you remember what are plants? क्या आपको याद है प्लांट्स क्या है, या फिर आप सब कुछ भूल चुके हो? हाँ, बट इवन इफ यू हैव फॉरगॉटन, अगर आप भूल गए हो नो प्रॉब्लम, हम फिर भी यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ओके, वेरी बेसिक, वेरी इजी। ओके, वेरी 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 इजी। what are plants? So plants are living things. Okay, plants are living things, they are made up of cells. So plants are living things means they are alive, they can make their own food. plants अपना खुद का खाना बना सकते हैं, plants breathe करते हैं, right? So what is this means that they are living things. Okay, and plants, they are made up of cells. Do you know what are cells? क्या आपको पता है cells क्या है? पता है आपको? Do you know what are cells? If you don't know, अगर आपको नहीं पता है, don't worry. So what is a cell? So look at that. Cell is the smallest functional unit of an organism. Smallest यानी suppose this is Siddiq. Okay, suppose this is me. Okay, so ये जो मेरी पूरी बॉडी है, ओके, ये छोटे 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 सेल्स से बनी है। ओके, लाइक ये जो बहुत छोटे 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 टाइनी सेल्स जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये एक बहुत टाइनी सेल्स है, और ये जब सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, राइट? ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग्स या फिर प्लांट। ओके, so what is a cell? Cell is the smallest functional unit of an
organism which is microscopic. Okay, one more time, microscopic. Okay, one more time, microscopic, like microscopic. Okay, so which is microscopic and consists of cytoplasm and a nucleus. Okay, I'm gonna say it again. मैं फिर से बोलता हूँ ये word, cytoplasm and nucleus. So what is cell? Cell एक बहुत ही smallest functional unit, यानी जो काम करने वाली चीज को क्या कहते हैं हम? फंक्शनल. सो सेल काम करता है इसलिए हम उसे कहते हैं फंक्शनल. सो the cell is the smallest functional unit of an organism which is microscopic, which is very small. बहुत छोटा होता है ये. माइक्रोस्कोपी यानी बहुत छोटा, आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते. इसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है. सो अगर आप उस चीज को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो उसे हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, राइट? सो सेल इज माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म और एंड न्यूक्लियस. सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इसी आप ये देख रहे हो, ये होता है न्यूक्लियस. एंड ये जो ब्राउन कलर का जो स्टफ है, राइट, ये जो ब्राउन या जो ब्राउन कलर देख रहे हो, ये है साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म. ओके, एंड दिस इज न्यूक्लियस. सो एंड इट इज एंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. ये आप जो पिंक कलर देख रहे हो, ये होती है मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज अ MEMBRANE. Same for the, okay, so I will clear this slide and okay, good. Again, one more time. Cell is the smallest functional unit. Cell is the smallest functional unit of an organism which is microscopic and consists of cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and nucleus. Enclosed यानी बंद. enclosed मतलब मेम्ब्रेन के अंदर बंद. ओके, enclosed in a membrane. Okay, enclosed in a membrane. Okay, let's go back. So now they are made up of cells. They need air, water, soil and sunlight to live. They cannot move from place to place, but their leaves move to catch the sun and their roots move to get water. So what do you mean by this? What do plants need? प्लांट्स को सर्वाइव, प्लांट्स को जीने के लिए क्या चाहिए? उन्हें जीने के लिए एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट, राइट? जब प्लांट, अगर आप प्लांट को वाटर नहीं देंगे, आप कभी आपने देखा हो कि अगर कोई प्लांट मर चुका है, राइट, अगर वो क्यों मर गया? क्योंकि आपने उसको पानी नहीं दिया. या फिर आपने किसी प्लांट को सॉइल में से निकाल दिया, आपने किसी प्लांट को जमीन में से निकाल के रख दिया, इट विल डाई, राइट, बिकॉज इट नीड्स सॉइल. अगर आपने किसी प्लांट को एक पैकेट में डाल के बंद कर दिया, इट विल स्टिल डाई. इट विल डाई. व्हाई? बिकॉज प्लांट्स को एयर चाहिए. एंड अगर आप, सो व्हाट डज इट मीन्स? प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू लिव. ओके, एंड आपने कभी देखा है प्लांट्स को रोड पे चलते हुए या फिर हवा में उड़ते हुए? नहीं, राइट? व्हाई? बिकॉज प्लांट्स they cannot move. Plants cannot move. Okay, plants cannot move, but their leaves can move, right? But their leaves can move. आपको सनफ्लावर प्लांट पता है? सनफ्लावर
सनफ्लावर मूव कर सकता है, लाइक जैसा ये सनफ्लावर है, और जब जब सन की डायरेक्शन चेंज होती है, सनफ्लावर का भी जो डायरेक्शन होता है उसके फ्लावर का, वो भी चेंज होता है। वाई? सनलाइट के लिए, इन ऑर्डर टू trap more sunlight so that they can move, so that they can make food for the plant. Okay. So their seeds can be carried by animals or blown by the wind. Okay. And जब plants जब seeds बनाते हैं तो उनके seeds किस तरह से reproduce होते हैं, उनके seeds किस तरह से सब जगह फैलते हैं? Why? How? By the help of animals and wind. Okay. आपने कभी I think all of you have actually seen this thing. It's okay, let me go take you to a white page. मैं आपको एक screen पे लेके जाता हूँ. And did you ever see like this small seed, and the feathers are like this, ये एक्चुअली ये वाइट कलर का होता है, राइट? और एक अंदर ऐसा एक सीड टाइप होता है. आप सभी ने तो ये देखा होगा. एंड हम वी डू लाइक दिस, एंड इट फ्लाइज अवे. दिस इज बेसिकली ऑफ एक्चुअली ये वाइट कलर का होता है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ सीड ऑफ अ प्लांट. ओके, so let's go back to a page. Now let's study the parts of the plant. Okay, now we will study the parts of the plant. Where it is smile. Okay, parts of the plant. So the first part is going to be roots, right? So the first part is going to be roots. I hope आप सभी को पता है roots क्या है. I hope you did not forget it. So what is the function of roots? Roots का काम क्या होता है? They take in water and food from the soil. Okay. Roots. Oh, sorry. Roots. The roots anchor the plants to the soil. So what is the function of roots? Roots क्या करते हैं? Soil में से water and minerals that is food from the soil. Okay. So roots take in water and minerals सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और सारे प्लांट्स में स्प्रेड करते हैं. क्यों? दे टेक दैट वाटर, वो वाटर एंड मिनरल्स, they take that water and minerals to different parts of the plant, which is the leaves. Okay, they take, so all the water and minerals, like, okay, this root is absorbing all the water and minerals and food, and it go to this leaf, then it will go to this leaf, then it will go to this leaf. Okay. And next, root anchor the plant to the soil. So how does, if, just think, सोचो कि अगर प्लांट्स को रूट्स नहीं है, राइट? अगर प्लांट्स के पास रूट्स नहीं है, सो प्लांट्स किस तरह से खड़े रह सकते हैं सॉइल में? दे कैन नॉट स्टैंड, राइट? सो रूट्स फिक्स करते हैं प्लांट्स को सॉइल के अंदर. दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय एंकर. ओके, so the roots fix the plant into the soil. So the roots anchor the plant into the soil. Okay, anchor. Okay, roots take in water and food from soil. The roots anchor plants to the soil. Great. Now let's move to stem. Do you see this picture over here? Right? This is the root, and now this is the stem. Can you see it? Yeah, very good. So stem. What is the function of stem? Stem का function क्या है? Stem transports water through the plant. Stem transports water through
plant, the stem, okay, let's just understand this first point. हम ये first point को ही understand करेंगे. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाटर एंड जो मिनरल्स होते हैं रूट्स में, ये स्टेम, ये ट्रांसपोर्ट, यू सी इट इज ट्रांसपोर्टिंग, मीन्स इट इज टेकिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये सप्लाई करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को. सो ये जो वाटर एंड मिनरल्स है, द स्टेम is going to transport it through a second. Okay, it's working now. So you see, it is transporting water and minerals to all the parts of the plant. Okay, now the stem raises the height of flowers and leaves and take them closer to light. So you see, जब प्लांट बहुत छोटा होता है उसकी हाइट बहुत कम होती है, एंड जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है यानी उसके स्टेम्स भी बड़े होते हैं, एंड जब प्लांट बड़ा होता है इट मूव्स क्लोजर एंड क्लोजर टू लाइट. वो लाइट के और करीब जाता है. क्यों? बिकॉज प्लांट्स को सनलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर इट्स सर्वाइवल. Light is very important for the plants for its survival. Hence, stem, it grows. Okay, it grows the plant. It helps the plant grow taller and taller and taller and taller and taller, and takes the plant more closer to light. Okay, and takes the plant more closer to light. Okay. The stem is made up of little tubes. You don't, right now at this point, for small students you don't have to understand this point, but this point is for students of class 8 and 7. Okay, I hope you all remember xylem and phloem. Okay, so the stem has xylem and phloem, which are little tubes. Okay, now let's move on to leaves. Leaves are the most important parts of the plant. Okay, why? Because almost always leaves are almost always green. Okay, as आप सभी को पता है कि leaves green होते हैं, but sometimes covered with another color such as red. So leaves can be green, leaves can also be red. क्या आपने ग्रीन लीव्स देखा? ग्रीन लीव्स तो आप सभी ने देखा होगा, बट क्या आपने रेड लीव्स देखे हैं? राइट, रेड लीव्स, एक रेड लीफ आपने देखा है? आई थिंक मैंने देखा है रेड लीफ. सो अगर आपने रेड लीफ देखा है, सो वेरी गुड, बिकॉज द लीव्स कैन बी ऑफ green color, the leaves can be of red color, the leaves can also be of purple color. Okay, the leaves make food for the plant. Very important, the leaves make food for the plant. To do this, they need the water and mineral salts obtained from the soil. Okay, so you see, they need water and minerals. They need water and minerals from the soil and sunshine and CO2 and sunlight. Okay, sorry, this is my son. And they need sunlight and CO2. So, and when they get water, minerals, sunlight and CO2, only then plants can make their own food. CO2 means carbon dioxide. Okay, CO2, what does CO2 means? CO2 means carbon dioxide. Let me take you to a slide. CO2. CO2 means carbon dioxide. Write it down. ये आप अपने बुक में लिखिए. CO2 का मीनिंग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन
dioxide. Okay. Now, let's read leaves again. Almost always green, but sometimes covered with another color such as red. Leaves make food for the plant. To do this, they need water and mineral salts obtained from the soil, sunshine, and CO2. Now, flowers. Flowers produce seeds which form new plants. Again, flowers produce seeds which form new plants. So, what will a flower do? What will a flower do? Suppose this is a flower, okay? The flower will produce small seeds, okay? And these seeds और ये flower will छोटे छोटे seeds produce करेगा और these और ये जो seed है will be blown by the wind. These seeds will be blown by the wind or carried by animals. Now, very important. Okay, very important. You see, a red colored leaf, green colored leaf, a orange colored leaf, right? You see the color of the leaf. Now, how plants make food? How plants make their food? I hope you know. I hope आप सभी को पता है. Plants make their food by the process of photosynthesis. Okay, photosynthesis, photosynthesis, photosynthesis. One more time. Plants make their own food. Plants make their own food. Leaves are the most important part of the plant for this process. So plants always make their own food, and leaves are very important because in the leaf they make the food by the process of photosynthesis. Within the leaf is a green material called chlorophyll. Okay, I will say it again. Chlorophyll. So within this leaf there is a small material called chlorophyll. Okay, and this chlorophyll is green in color. Okay, this chlorophyll is green in color, and that is why the leaf gets green color. So ये जो क्लोरोफिल है उसका कलर होता है ग्रीन, एंड दैट इज वाई लीव्स का भी कलर होता है ग्रीन. अगर क्लोरोफिल रेड कलर का है, लीव्स का कलर क्या होगा? रेड. वेरी गुड. सो chlorophyll absorbs sunlight to make natural sugar that the plant uses for food. This process is called photosynthesis. Now, roots से क्या मिलता है हमें? Water and minerals. Okay, and chlorophyll. What does chlorophyll do? Chlorophyll absorb करता है sunlight. Chlorophyll traps the sunlight to make a natural sugar. What? To make a natural sugar. This sugar is food for the plant. Okay, this sugar is food for the plant. And ये sugar कैसे बनता है? ये sugar कैसे बनता है? By the process of photosynthesis. By the process of photosynthesis. Now, during photosynthesis, plants use light energy from the sun to convert. During photosynthesis, plants use light energy from the sun to convert carbon dioxide from the air and water from the soil into sugar to feed the plant. During this process, oxygen is released into the air because of
that plants are very important since they clean the air. Okay. Now look at this image, right? So it's not working. Okay. So what is happening over here? You see the sunlight, there is chlorophyll inside this leaf. Okay, there is chlorophyll inside this leaf, and from the roots the leaf is getting water and minerals. Okay, so the leaf will be trapped inside this chlorophyll. What will chlorophyll क्या करता है? Sunlight को absorb करता है, and the leaf will also take in carbon dioxide. Leaf carbon dioxide, light carbon dioxide, water को sugar, okay, sugar एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है. एंड दिस शुगर, ये जो शुगर होता है, दिस इज फूड. ये शुगर होता है फूड फॉर द प्लांट. दिस शुगर इज फूड फॉर द प्लांट. नाउ लेट्स लुक ओवर हियर अगेन वन मोर टाइम. यू सी sunlight and carbon dioxide from air. Sunlight and carbon dioxide, we get it from the surroundings. we get water from soil. Now this goes up and the leaves will make food by the process of photosynthesis, and this food is sugar. Okay, this food is sugar. And also leaf will convert this carbon dioxide into oxygen. लीफ क्या करते हैं? लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ऑक्सीजन में कन्वर्ट. व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स, हमें ऑक्सीजन चाहिए. किस चीज के लिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए लिव करने के लिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए. हमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इनहेल कर सकते, हमें ऑक्सीजन चाहिए. So what do plants do? Plants convert this carbon dioxide into oxygen, and we take in this oxygen. That is very important for us. Now let's go back and let me clear this page. Okay, so during photosynthesis, plants use light energy from the sun to convert carbon dioxide from the air and water from the soil into sugar to feed the plant. During this process, oxygen is released into the air. Because of that, plants are very important since they clean the air. One more time, look over here. Can you see this? Light, carbon dioxide and water is all taken into the leaf. Carbon dioxide, water and light सब चीज लीफ में एब्जॉर्ब हो रही है, एंड लीफ क्या बना रहा है? शुगर and oxygen. Okay, now let's move on to next page. We are almost done with the class, and I think this is very easy, बहुत easy है. So why plants are so important, right? Why are plants so important? Can you think why plants are so important? Give me one reason why plants are so important. Maybe food, right? We get food from the plants. we eat so many plants. So let's just go point by point. They give us food from all different parts of the plant. The flower, fruits, vegetables, seeds, nuts, stems and leaves. So plants provide us with food. Some plants give us medicine. Trees are also used to make paper and furniture, right? If you see this paper
is made from plants. Okay, this paper is made from plants. And also the furniture like the bed, bed and the chair. What are these? These are furniture. So these the plants help us to make furniture and paper. They clean the air as they take carbon dioxide, which is bad for us, and expel oxygen. Means expel means release, expel means give out. Okay, and they expel oxygen which is good for us. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, और वो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, प्लांट्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस. हैबिटेट मीन्स हैबिटेट का मतलब पता है आपको? हैबिटेट मीन्स अ प्लेस टू लिव. ओके, सो आपने देखा होगा कितने सारे लाइक एनिमल्स एंड लाइक बर्ड्स एंड छोटे छोटे और दूसरे काफी सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे. वेयर डू दे लिव? दे लिव ऑन ट्रीज. They live in jungle. And what is jungle? There are so many plants in the jungle, right? So what do plants do? Plants provide habitat for animals and humans. Plants protect the soil from erosion. Plants also protect the soil. So you see, when आप जब पानी डालते हैं किसी प्लांट के ऊपर, तो जो सॉइल होता है वो पानी के साथ बह के नहीं चले जाता, राइट? वो प्लांट्स के सराउंडिंग में इंटैक्ट रहता है. वो वहीं पे ही एकदम सॉलिडिफाई, एकदम वहीं पे ही स्टैंड रहता है, राइट? वो पानी के साथ नहीं बह जाता. सो व्हाट डू प्लांट्स डू? प्लांट्स प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. ओके, नाउ ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्लास. हम क्लास के साथ, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है. एंड बट होमवर्क, लॉट्स ऑफ होमवर्क. एंड आपको जो सारे ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने बनाए हैं, ये आपको अपने होमवर्क बुक में लिखना है three times, राइट? सो क्वेश्चन एंड आंसर, राइट? ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स 3 times. Okay, 3 times each to practice writing, reading and learning. Okay, ये आपके पेरेंट्स ने, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने हमें बताया था कि आप रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग स्किल्स भूल चुके हैं. सो ये हमारा एफर्ट है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर सके. दिस इज़ अ होल रिविजन विद प्रैक्टिस क्लास. सो आपको क्या करना है? आपको वीडियो पॉज करनी है और आपको वीडियो से आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर्स अपने होमवर्क बुक में लिखने हैं, राइट? जो रेड में है वो क्वेश्चंस है और जो ब्लैक में है वो आंसर्स है. ओके, सॉरी. सो ये पेज नंबर 1. ओके, पेज नंबर 1. दिस इज पेज नंबर 2. What are the function of leaves? How do plants make food? Write down the process of photosynthesis. ये पेज नंबर 2 फॉर होमवर्क. एंड दिस इज पेज नंबर 3. वाई आर प्लांट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? ये है लॉन्ग आंसर्स. वाई आर प्लांट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? तो आपको क्या करना है, मैंने पेजेस बहुत ही फास्ट चेंज किया हूँ, बट आपको पीछे जाके, आपको बैक जाकर आपको इस पेज को पॉज करना है और आपको अपनी बुक में ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स 3 टाइम्स लिखने हैं. ओके, सो वन मोर टाइम. व्हाट आर प्लांट्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स? हाउ डू प्लांट्स मेक फूड? राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. And why are plants so important to us? अब
अगर आपका ये सब हो चुका है, you can have a cookie. Okay. I think my favorite cookie, let me see, I think my favorite cookie, ये मुझे ये वाली कुकी ज्यादा पसंद आई, लाइक चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, लॉट्स ऑफ चॉकलेट. सो मुझे प्लीज आप बताइए आपकी कौन सी फेवरेट कुकी थी. ओके, आई लाइक दिस, आई एक्चुअली लाइक दिस कुकी. सो दिस इज, आई रियली लाइक दिस. So let me know आपकी कौन सी favorite cookie थी. And thank you everybody. Thank you for watching the lecture. Thank you for being present in the class. And I hope to see you back again in the next class. Okay. See you and have a nice day, everybody. Bye bye.